Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we had been discussing about the different kinds of gametes and the formation of different gametes. Now today we will move on to the next topic, that is going to be the mechanism of fertilization. Fertilization literally means the fusion of the male and female gamete. Now in case of angiosperms, you'll find that this fertilization takes place in a very different way. We call it as double fertilization. तो यहाँ एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें जिस टाइप का फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. तो लेट अस सी व्हाट दिस मैकेनिज्म इज एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट. So the fusion of male and female gametes is termed as fertilization. This is a very basic definition that we know कि मेल और फीमेल गैमेट जैसे फ्यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं fertilization. In flowering plants, two male gametes enter into the cytoplasm of the synergid through the microfilar end of the ovule. These two male gametes undergo fusion inside the ovule. Now please have a look at the diagram below. ये वाला टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि ये जो दो मेल गैमेट्स हैं which are actually a part of the pollen tube. So the pollen tube will enter into one of the synergids by the help of filiform apparatus. तो filiform apparatus के help से ये जो दो male gametes हैं ये enter करेंगे into the embryo sac. जैसे ही वो लोग synergids के थ्रू से enter करेंगे they will move directly into the embryo sac. तो ये वाला जो सेल है synergid है, as you can see this cell is the synergid through which these two male gametes are entering. After entering they will cross the synergids and they will be released into the embryo sac. Now one of that male gamete, उनमें से एक male gamete, it will go towards the egg cell to fertilize with it. वो egg cell की तरफ चला जाएगा fertilize करने के लिए, जबकि दूसरा male gamete जो है, this one here, it will move towards the polar nuclei. तो दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा टू फर्टिलाइज. सो दिस डायग्राम बेसिकली, ये जो डायग्राम है ये after the pollen tube has entered into the embryo sac, the turn of events which is taking place उसको उसने represent किया है. तो दो मेल गैमेट जो होते हैं जैसे ही सिनर्जिड के अंदर एंटर करेंगे उनमें से एक मेल गैमेट चला जाएगा टुवर्ड्स द एग सेल टू कैरी आउट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द जाइगोट, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है वो चला जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ. इट विल गो टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल. तो वो सेंट्रल सेल की तरफ चला जाएगा टू कैरी आउट अनदर फ्यूजन, अनदर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो एज बिकॉज दो जगह पे एक साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. Now, the word syngamy literally refers to the fusion of one male gamete and one female gamete. So, fusion of one male gamete with the egg cell to form the zygote is termed as syngamy. तो ये वाला जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, I'll just erase everything. ये वाला जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है जहां पे एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है टू फॉर्म जाइगोट, इस प्रोसेस को बोला जाता है सिनगैमी. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड आप देखोगे ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाके फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ विद दिस स्ट्रक्चर, राइट. नाउ दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. तो ये जो फ्यूजन होगा, दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो उससे एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हैविंग सेल फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दैट विल बी टर्म्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन मैकेनिज्म. तो सिनगैमी बेसिकली रेफर्स टू दिस फ्यूजन जहां पे एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. Now let's move on to the next slide to understand the further developments. Now as you can see here, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो the other male gamete fuses with the polar nuclei forming the primary endosperm cell PEC. Now the PEC later on develops into the endosperm. तो बीच का जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो आपका ट्रिपल फ्यूजन होगा, which we have seen here, इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है having 3n number of chromosome containing cell. 3n कैसे हुआ? पहले दो पोलर न्यूक्लियाई था n and n, that means it was having a diploid configuration. 2n configuration में ऑलरेडी था ये. अब उसके साथ जब एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया तो 2n plus n, that becomes 3n, ट्रिप्लॉइड. तो पहले जो सेल फॉर्म होता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, that is called as primary endosperm cell. Now this primary endosperm cell will later on develop into the endosperm. So this kind of fusion is termed as triple fusion. तो ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद दोनों एक साथ जब होता है, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन दोनों एक साथ जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन.
दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है एग सेल और मेल गैमेट का टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है central cell having two polar nuclei fusing with one of the male gametes to form endosperm. So as because two different fertilizations simultaneously are occurring inside the embryo sac, we term this process as double fertilization. So धीरे धीरे करके ये जो जाइगोट है ये डेवलप करेगा into the embryo and the seed, whereas this endosperm will provide nutrition to the developing embryo. तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखो एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग जाइगोट व्हिच फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। Now embryo sac में जो एंटीपोडल सेल्स हैं, 3 एंटीपोडल cells which were present towards the chalazal end, they will denature, they will disintegrate, ठीक है, whereas the synergids also disintegrate. ये जो एग सेल था इसके दोनों तरफ दो synergids है, there were two synergids supporting the egg cell. After the entry of the pollen tube, these two synergids also will disintegrate. So after the double fertilization mechanism has occurred, there will be no antipodal cells, there will be no synergids. The zygote will have been formed which will develop into the embryo. Zygote form हो गया होगा जो embryo में develop करेगा, और आपका PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्फ फॉर्म हुआ होगा आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन जो बाद में डेवलप करेगा इनटू एंडोस्पर्म. नाउ दिस टोटल मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. प्लीज गो थ्रू विथ इट because you can have long question from this specific topic. And remember, the double fertilization mechanism only occurs in the angiosperm. Okay, so in the next class we'll move on to the development of the embryo, the embryonic development, and we'll see what are the stages and how this zygote will develop into an embryo and then form the seed and the fruits. Okay, thank you everyone.